Namaskar dosto. This is a quick update on the results of Ion Exchange. So the Q1 FY27 results of Ion Exchange are out and the results do not look that great. So we'll just discuss the numbers, the reasons for the result not being great, and we'll try to understand whether this is temporary or structural, right? So if you look at the top line, it grew by 20% year on year. So the demand for the services which Ion Exchange provides is very, very robust, right? Even if you look at the order book, it is like 1.5x FY26 sales. The bid pipeline is like 9,500 crore, when the sales for FY26 have been 2,000 crore. तो कहने का अर्थ ये है कि the demand for the services which this company provides, which is desalinization, recycling of water, waste and wastewater treatment, water treatment, right? So this company works with all these major industrials, right? Metal companies, the petrochemical companies, right? Power companies, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी, एक तरह से सीवेज का पानी या फिर एफ्लुएंस का पानी जो है या गंदा पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है. एंड देयर आर सर्टन मैंडेशंस बाय द गवर्नमेंट, देयर आर certain regulatory compulsions by the government that water needs to be clean. Plus it works with all these municipalities as well, wherein it does a lot of sewage treatment and all. So the demand for the services that this company provides is very, very सीरियस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अगर प्लास्टिक में रिसाइकलिंग हो सकती है, बैटरी में रिसाइकलिंग हो सकती है, तो पानी में क्यों नहीं रिसाइकलिंग हो सकती है, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट हैज़ कम अप टू kind of push these kind of companies or recycling of water. So one need not worry about the demand or the top line of companies in this space, and particularly Ion Exchange, right? So this is one thing. The thing which deteriorated is in the bottom line, or the profitability of the company deteriorated. So if you look at the EBITDA, it contracted by 50% and PAT contracted by almost 92%. तो जो भी contraction दिखा है वो bottom line में दिखा है, demand में नहीं दिखा है, right? तो what are the reasons for this, right? तो जैसे मैंने कहा, कंपनी के प्रिडोमिनेटली दो बिजनेसेस है. एक तो ईपीसी बिजनेस है जो डीसैलिनाइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, इसको ईपीसी बिजनेस बोलते हैं. एंड दिस कंट्रीब्यूट्स अराउंड 60% टू द टॉप लाइन. दिस इज़ अ लो मार्जिन बिजनेस, तो इसका एबिटा मार्जिन करीबन 4 to 5% का है, राइट? ना प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा हुआ ये है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को मिले, तो टेंडरिंग का प्रोसेस होता है एंड कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं. All these projects, or most of the projects that are there in the EPC kind of segment, they are in an initial stage of execution. तो कोई भी चीज़ अगर initial stage of execution में होती है, तो उसका जो initial overheads या initial capex बोलो या initial capital outlays बोलो बहुत ज़्यादा होते हैं, right? So once these projects kind of move, progress, तो वो कहीं ना कहीं वो blend हो जाता है, कहीं ना कहीं वो cost जो है वो project के साथ blend हो जाता है. तो one need not worry about this thing. It is just that the projects are in an initial stage of execution. That's why the initial capex or initial cost of those projects have gone up. That's why this segment, which was showing a profitability of around 20 crore last quarter, is showing a loss of around 20 crore, right? तो इस segment के लिए या फिर इस quarter के लिए थोड़ा loss में, but this is a temporary thing. This kind of segment, EPC segment, contributes around 60% to the top line, and it's a low EBITDA segment, करीबन 4 to 5% का इसका एबिटा मार्जिन होता है. तो इसमें अगर थोड़ी दिक्कत आ जाती है और इसमें अगर लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा पीएनएल के ऊपर इसका असर काफ़ी क्लियर कट दिखता है. तो ये एक प्रॉब्लम है. द सेकंड थिंग इज देयर इज़ द केमिकल बिजनेस दैट दिस कंपनी इज इनटू एज वेल. तो ये कंपनी जो डीसैलिनाइजेशन करती है, दे गिव आउट केमिकल्स और दे सेल केमिकल्स टू डू दिस प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. सो दैट contributes around 30% to top line, and this is a high margin business. So the EBITDA for this business is around 30 to 35%. So this is a high margin business. It contributes around 30% to the top line. और ये chemicals बहुत important होते हैं. जैसे ये semiconductor fabs आ रहे हैं या फिर ये EMS की projects आ रहे हैं, तो इसमें आपको ultra pure पानी चाहिए होता है for all these technological kind of industries that are coming up, right? And that is what this company supplies. So these are called as resins or chemicals. एंड द थिंग इज़ कि इसमें बहुत भारी मात्रा में एबिटा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, क्योंकि दीज केमिकल्स आर पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स, मतलब क्रूड के डेरिवेटिव्स है. स्टाइरीन नाम का एक केमिकल है विच इज़ अ पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव विच कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, एंड ड्यू टू द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, ड्यू टू द वॉर, there is a lot of problem in the supply chain of these chemicals, and the prices or the input cost of these chemicals or styrene has gone up. So the
contraction that you see in the margin is not the story for just Q1 FY27. The contraction in the chemical business with regards to margin was seen in Q4 FY26 as well. मतलब पिछले क्वार्टर जब ये वॉर शुरू हुआ था तभी दिखा था. In spite of this, the stock kind of went up somewhere. I mean, all-time highs शायद reach किए थे in the month of June. तो you know, as soon as this war kind of takes care of itself, maybe in a quarter or two, ये जो एक temporary problem है वो भी solve हो जाएगी, right? तो इनका जो नया capex आ रहा है, it's a greenfield capex और ये chemical के लिए ही capex किया है इस कंपनी ने, right? But the fact that the chemical business is फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन द फ्रंट ऑफ कॉस्ट, तो ये थोड़ा जो प्लांट जो लगाया है वो थोड़ा अंडर यूटिलाइज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसलिए इसका प्रभाव आपको एबिटा कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी क्लियर कट दिखेगा. सो दीज आर द इश्यूज दैट दिस कंपनी इज फेसिंग विच आई थिंक आर टेम्पररी. स्ट्रक्चरली दिस कंपनी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड द थीम in which it is a very strong theme as well. So this was a brief about Ion Exchange. Thank you very much for your time. थोड़ा स्टॉक प्राइस करेक्ट होगा बट उतना तो करेक्ट होता ही अगर खराब रिजल्ट्स आते हैं, but I think the long term story is still intact. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.